प्रतिष्ठित साहित्यिक कृति को बाकी 23 भारतीय भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से पहुंचाने का विशेष उद्देश्य। इसी उद्देश्य के साथ एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक ज्ञान परंपरा दूसरे क्षेत्र के ज्ञान परंपरा से मिलती है। इस तरह से साहित्य अकादमी अनुवाद के माध्यम से का निर्माण करने की कोशिश कर रही है। मैं इस सत्र के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर राणा नायक जी का आपसे परिचय करवा देता हूँ। वर्ष 2017 में अंग्रेजी तथा सांस्कृतिक अध्ययन विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में अंग्रेजी तथा सांस्कृतिक अध्ययन विभाग पंजाब चंडीगढ़ में अपने प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्ति ली। आपकी 22 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। प्रतिष्ठित व्यावसायिक अनुवादक होने के नाते आपने पंजाबी की लगभग 14 आधुनिक कृतियों का कालजयी कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आपकी 4 समीक्षात्मक पुस्तकों के अलावा एक कविता संग्रह ब्रीदिंग स्पेस भी प्रकाशित है। आप प्रतिबद्ध रंगमंच प्रेमी हैं। आपने 20 से अधिक प्रमुख और लंबे नाटकों का निर्देशन किया है तथा कई नाटकों में अभिनय भी किया है। हम आदरणीय राणा नायक जी का साहित्य अकादमी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री दामोदर भट्ट से प्रख्यात लेखक और अनुवादक हैं। आपके 4 उपन्यास, कई कहानी संग्रह, 10 कविता संग्रह, यात्रा वृत्तांत और साक्षात्कार की पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपने 21 मराठी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है। आपकी रचनाओं का मराठी, कन्नड़, गुजराती और कई अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आपको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, केंद्रीय हिंदी संस्थान पुरस्कार, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद पुरस्कार, महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से अलंकृत किया जा चुका है। हम डॉक्टर दामोदर भट्ट जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में वर्षा दास जी पधार चुकी हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। राहुल आगे बताएगा तो नीचे डाउन होकर करेगा। आदरणीय गोपीनाथ ब्रह्म बोडो भाषा के कवि, कहानीकार और साहित्यिक समालोचक हैं। आपने अर्थशास्त्र तथा बोडो साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधियां प्राप्त की हैं। आपकी 5 कृतियां प्रकाशित हैं। इसके अलावा आपने एम मुकुंदन के मलयालम उपन्यास देवखीते विकृतिकल का बोंगलोरिनी भाव शीर्षक से बोडो भाषा में अनुवाद किया है, जिसके लिए आपको वर्ष 2019 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। आपको मंगल चंडी ब्रह्म साक्षरता पुरस्कार तथा बोडो साहित्य सभा द्वारा रंगसर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आप असम के सोनितपुर में हेम बरुआ हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। हम गोपीनाथ ब्रह्म जी का भी अकादमी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री जे.एल. रेड्डी प्रख्यात अनुवादक हैं, जो हिंदी और तेलुगु के बीच में एक लंबे समय से सेतु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपने तेलुगु से हिंदी भाषा में बहुत सारी कृतियों का अनुवाद किया है। आपकी 20 से अधिक कृतियां प्रकाशित हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रकाशन विभाग, राजकमल प्रकाशन, किताबघर सहित अनेक प्रकाशकों ने प्रकाशित किया है। आपको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सौहार्द पुरस्कार, अमर उजाला हिंदी दैनिक द्वारा भाषा बंधु पुरस्कार, इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय का साहित्य सेवी पुरस्कार सहित अनेक अलंकरणों से विभूषित किया गया है। हम श्री जे.एल. रेड्डी जी का अकादमी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मिनी कृष्णन जी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया वर्ष 2019 के लिए अनुवादों 16 भारतीय भाषाओं यानी आज तक 100 से अधिक अनुवाद की कृतियां की स्रोत कथाओं, नाटकों, यात्रा वृत्तांतों, आत्मकथाओं तथा जीवनियों को संपादित किया है। आपने ओयूपी तथा मैकमिलन इंडिया लिमिटेड के लिए अनुवादों को संपादित किया है। आप ब्रिटिश काउंसिल द्वारा आयोजित साउथ एशिया राइटर्स की वेबसाइट के संस्थापक संपादक तथा ट्रांसलेशन मिशन और इंडियन लिटरेचर अब्रॉड की सदस्य रह चुके हैं। आप
द हिंदू तथा मातृभूमि के अंग्रेजी पोर्टल के लिए लिखती हैं तथा फ्रंट लाइन के लिए अनुदित कथा रचनाओं का चयन करती हैं। हम मिनी कृष्णन जी का भी अकादमी की ओर से बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी को कल के कार्यक्रम में मृदुला गर्ग जी ने अपनी कृति के अनुवाद के सिलसिले में बात की थी और उन्होंने बताया था कि मिनी कृष्णन जी ने एक नष्ट हो चुकी कृति को किस तरह दोबारा से उनके साथ संवारा था। तो एक अच्छे अनुवादक की जो भूमिका होती है, हमने कल महसूस की कि एक कृति का जो वास्तविक भाव है कैसे दूसरे भाव तक सुरक्षित रखते हुए दूसरी भाषा में पहुंचाने का कितना बड़ा उत्तरदायित्व और कर्तव्य होता है अनुवादक के लिए, और वो आपने करके दिखाया है। यहाँ पर जितने भी रचनाकार हैं वो इस क्षेत्र के महारत लिए हुए लोग हैं। मोनालिसा जेना जी ओडिया कवयित्री और लेखिका हैं। आपको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपका एक उपन्यास, 4 कहानी संग्रह, 3 कविता संग्रह और ओडिया में 2 आत्मकथाएं प्रकाशित हैं। आपकी उल्लेखनीय कृतियां हैं दसूडामस स्क्रिप्ट, समकालीन ओडिया कहानी संग्रह तथा प्रतिभा राय कृत ओडिया उपन्यास सिकटेल्ड लव का अंग्रेजी अनुवाद। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 में आपके नवीनतम ओडिया कहानी संग्रह When Ravens Speak and Horses Fly का प्रकाशन किया। आपकी ओडिया कविताओं तथा कहानियों का असमिया, हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी तथा इताली भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। हम मोनालिसा जेना जी का अकादमी की ओर से स्वागत करते हैं। आदरणीय बलमाला विश्वनाथ जी ने विभिन्न संस्थानों में 4 दशकों से अधिक समय तक अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्यापन किया है। आपके अनुवाद कार्यों में संस्कार का स्वीडिश में तथा स्वीडिश उपन्यास द वे ऑफ द सर्पेंट सहित कई कन्नड़ कालजयी कृतियों का कन्नड़ में और अनुवाद शामिल है। आप द्वारा कन्नड़ में इंदिरा बाई कृत उनके प्रथम सामाजिक अनुवाद उपन्यास के अनुवाद के लिए आपको कुवेंपु भाषा भारती प्राधिकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ अनुवाद पुरस्कार से अलंकृत किया गया। आपने कथा क्षेत्रीय बौद्ध अकादमिक केंद्र बेंगलोर में एसोसिएट डायरेक्टर तथा साहित्य अकादमी नई दिल्ली के सेंटर फॉर ट्रांसलेशन के मानद निदेशक के पदों पर कार्य किया है। हम वनमाला विश्वनाथ जी का अकादमी की ओर से स्वागत करते हैं। आदरणीय वर्षादास जी गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में लिखती हैं। आप ओडिया, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में अनुवाद करती हैं। आपकी 50 से अधिक कृतियां प्रकाशित हैं, जिनमें फिक्शन, नॉन फिक्शन और बाल साहित्य की पुस्तकें शामिल हैं। आप शिक्षा, साक्षरता, साहित्य, कला और पुस्तक विकास पर लेख लिखती हैं। सीताकांत महापात्र के ओडिया कविता संग्रह सप्ताह आकाश का आपने गुजराती में अनुवाद किया, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। हम आदरणीय वर्षादास जी का भी अकादमी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अब ये मंच मैं सत्र के सम्मानित अध्यक्ष के हवाले करता हूँ। ये विद्वानों को आमंत्रित करेंगे और आगे का संचालन करेंगे। धन्यवाद अनुपम जी। My fellow translators and very distinguished, eminent people, teachers, scholars, writers, and our dear audience. Milton once said, "Give me an audience fit of few," and I hope that is true of the audience we have. So we are very thankful to you that you are here to listen to this discourse on translation. Let me put my cards on the table straight away. I don't want to take too much of your time. In fact, I'm just here to coordinate the panelists, and whatever they have to say is very, very significant. So I think we need to give much more time and space to each one of them than I can actually swallow. But I will put few things in place, if I may. I'm sure we all would agree when I say that today when we talk of translation, we have so much to look back to, just as we have so much more to look forward to. We are at a cusp of change, if I may say so.
I remember at some point of time, Jürgen Habermas made an observation, which I'm going to repeat with a slight difference. He said, modernity is an unfinished project. I'm going to borrow his expression and say that translation studies in India is an unfinished project. And let me quickly elaborate on this idea as to how and in what different ways do I think that it is an unfinished project. I think we are at a stage where we have to start thinking, and this is where probably I'm looking at the organizers, and I'm looking at the institutional help that they can provide. We have to start thinking in terms of writing histories of translation in different Indian languages. I think a lot of work is being done in translation, quality work is being done in this area. But one thing where we seem to be lacking is documenting the kind of work that is happening. So we need to now probably find people, scholars, writers. Most of them are sitting here, some of them are here, some of them are maybe sitting with the audience as well. We should try and involve all of them so that we can start writing histories of translation in different languages. We have models before us, history of Indian literature, which was edited by Sisir Kumar Das, and we have histories in different languages. I think this was a project undertaken by Sahitya Akademi in 1990s. Another important challenge that we have before us, as I see it, is that we have to ask ourselves this question. Is there, and I'm not saying that this question has not been asked, but I think it needs to be asked in a more systematic and organized manner. Is there an Indian theory of translation? We've been doing translation. Practitioners of translation are sitting here, and I'm sure people in the audience are equally interested in what translation is all about. Practice is there. Practice in translation, as far as I understand it, is never divorced from theory. But I think we need to now think in terms of indigenous metaphors, native theory of translation, if we may, and we have to see how we can actually start theorizing whatever practice we have had until now. Third challenge which I see, I was talking to Vanamala Vishwanathan ji, we traveled together from our hotel, and I mentioned it to her briefly. One important challenge that we face is, translators belong to a marginalized tribe. Someone has talked about invisibility of translators as well. Lawrence Veduti is the one who mentions this. But apart from being marginalized, I think we are also a kind of a disorganized sector. No one actually talks about the rights of translators. And people think that they can pay whatever little amount they can and get the translation done. And that's true, let me tell you, not only of writers, but also of institutions. I have no hesitation in saying that. And I'm sure most of the people who are engaged in this enterprise would agree with me there. So we need to take a step where we actually form an Indian Association of Translators. It will come as a shock to you that such an association does not exist, despite the fact that so much of translation is happening in our context. There is one private enterprise called Indian Association of Translators, but that gentleman, I respect him for whatever he's doing, but he's doing it for commercial purposes. I don't think we have that in mind when we think of, because someone has to think in terms of giving us a forum where we can have an interchange and exchange of ideas with each other. So Indian Association of Translators would be a good
starting point, I think, in that direction. The last point that I wish to make in this context, because I promised that I will not really take too much of your time. This is a question, earlier I talked about how we need institutional support. I was thinking of academics and scholars when I talked about the theoretical turn in translation or Indian turn in translation. Now I think I have this submission for the translators. We all understand that we operate not in one language, but we operate in multiple languages. When I think Anupamji was reading out the CV of some of our eminent translators on the panel, it suddenly dawned on me that we have people who operate in multiple languages, which is a blessing. I think we are aware as translators of the kind of politics. There's something called politics of translation, and there is something called politics of language as well. But I don't know, when I reflect on my role as a translator, I think I learned one simple thing, that we are also the people who actually have belief, and a belief that it becomes a conviction at some point, in equality of languages. We can actually become, if we want to, ambassadors of what I call Republic of Languages, where all languages are treated with the same kind of respect as some languages are. I'm talking about it with a certain kind of an idea in mind. We believe in notions of power, we believe in notions of hierarchy, and we also believe in notions of politics. And even for certain historical reasons that I understand, languages tend to have some kind of an unequal relationship with each other. We can become ambassadors and convince people, especially in the kind of times we are living in, where language controversies can take a very sordid turn. So therefore, I think we need to convince people that languages are all equal. It's good to love your language, but I think it's far more important to love someone else's language, and that's exactly what a translator does. We have to share that love with others, and we also have to pass on this conviction to others that we believe in Republic of Languages. 75 साल के बाद भी हमारे Republic का dream remains a dream. Let us start with another dream of setting up a Republic of Languages. Thank you. Now, I think we go in this order, if you allow me. It's I can start with one. So I think we'll follow a certain kind of an order, and it's my honor now to request Varsha Das ji to come here and share her observations with us. Let me specify, when we were discussing the format of this panel discussion amongst ourselves, we came to a decision which we need to announce so that you know exactly where you stand in relation to us. It'll simplify things for everyone concerned. We are going to give 10 to 15 minutes to each of the panelists. And once everyone has had his or her turn, we'll throw it open to the house. So, Varsha Das ji, please come and share your observations. My pronouns for
those who are on the dais and in the audience. Well, I was told that there will not be speeches, there will be discussion. So I have not prepared anything which can last for 10 to 15 minutes. But let me just share some of my thoughts. Like we say, Bhashantar and Anuvad. We have to understand the difference between the two. Because Bhashantar is like transferring into another language. Anuvad is something which is coming after what is in front of you. So it is almost like transcreation and not literal translation from one language to the other. And I have been translating since my teenage because my father was a writer, journalist. I am a Gujarati. My mother tongue is Gujarati. And we were in Bombay. And in Bombay, Marathi and Hindi, English, all the languages. I think in India, all of us speak more than one language. Anyways. So we are already multilingual people. Each one of us here and in the audience as well. So my father used to tell me to translate some Marathi articles of Kakasaheb Kalelkar or Vinobaji into Gujarati for his newspaper. And that's how my training of translation started at home. And I think home is the best place for training, particularly when you get it from your parents. And that helped me to write in multiple languages and also to understand that the knowledge of both the languages are extremely important. It's not the language in which I am translating, but also the language from which I am translating. So it's not just the dictionary word translation, but to know the culture of both the languages. And without that, we will not be able to do justice. And we face this problem particularly when we are translating proverbs, because it is totally like coming out of the culture of that soil, that language. For example, I came across one Bangla poem, Gache Kanthal Gofe Te. That is, the jackfruit is on the tree, but here the person is ready with oil on his mustache. So, how do I translate that into Gujarati? It can't be literal translation because it will have no sense. In Gujarat, we don't eat jackfruit. And so there is another proverb in Gujarati which says, Bhains bhagode, chash thagode, gharma dhama dham. The buffalo is still grazing in the ground outside. Bhains bhagode, chash thagode. After that buffalo comes home, then it is milked and then dahi is made, and on the second day it will be churned in. But there is a quarrel who will have that buttermilk first. So one has to really understand the culture of the language from which one is translating and also the one into which one is translating. So our topic is also about the transference of culture, to understand that, Like I was working with the National Book Trust, and we used to get many books from other countries. Like there used to be joint publishing programs. So there was one program of translating children's books from Japan.
And the title of that book, Japanese book into English was Little Cabbage. Now, cabbage in Gujarati is Kobi, which is a feminine gender. But it's a children's book full of illustrations, and the cabbage was a one fat man with pants and hat and everything. Now, how can I say Kobe when the illustration does not gel with it? So it was very tough job, and I started research. How can I find a masculine gender for Kobe? And after asking many people, looking at various dictionaries, I came across one word which says Karam Kallo, which is for Kobe and it is masculine. So I did use that, but just as I was not familiar with Karam Kallo, even the children, Gujarati children would know what is Karam Kallo. But then you have to relate to the illustrations when it comes to children's books. So these kind of challenges are always there when we translate in any language, from any language. And I think as our president, the chairman of this session rightfully said, that we need a forum to address these kind of issues, arrive at some theories also. And I remember one very good example. It happened many, many years ago, but Sahitya Academy had organized it, where we were translating one poet's poetry from Hindi into another language. So there was the poet, the translator, and the language expert. Three of us sat together and took up this translation project. And I think that kind of discussion which takes place and you arrive at the right choice of words, etc., it really helps. So there are various ways of translating, but I'm sure many more suggestions will come up during the session. And thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, Varsha Das ji. She made very important observations about cultural translation. I think one of the points that she was trying to emphasize is that we should not only think of translation as some kind of a linguistic negotiation. It's a very complex kind of cultural negotiation. And in order to emphasize that, I think she picked up examples from her own experience, where she translates books from other languages into Gujarati. Apart from that, she also underlined how we need to have a forum, the point that I was trying to make, where we can actually discuss not only problems of translation, challenges of translation, but also maybe think of how we can protect the rights of translators as well. Thank you, Varsha ji, for sharing your views with us. I now request Gopinath ji to come up on the stage. In fact, my task as a chairperson has been made much easier. I should have mentioned it right in the beginning by Anupam ji, because he's already done the honors of introducing all the panelists to the audience. So may I now request Gopinath ji to come up here and share his views on challenges of translation. Honorable chairpersons of this panel. Translative मैंने मेरा 2
एक शब्द एक शब्द मीडियम होगी ना। हिंदी में बोलूँगा। तो ट्रांसलेशन के बारे में वो मेरा विचार है कि एक्चुअली मैं एक बैकग्राउंड को बोलना चाहता हूँ। पहले मैं बोडो लैंग्वेज का तो लेखक हूँ। बोडो लैंग्वेज आप लोग को इसके बारे में जो लिंग्विस्टिक साइड में इसमें मंथली बोलने का अवसर नहीं है, लेकिन बोडो लैंग्वेज है तिब्बत टोबागोस लैंग्वेज का है, जो इंडो आर्यन लैंग्वेज से बहुत फर्क होता है। बोडो लैंग्वेज का इसका टोन वगैरह वगैरह, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ब्स, ऑल ऑफ दिस। जो नॉर्दर्न इंडिया का जितना भाषाएं हैं, बोलियां हैं, थोड़े बहुत हमारे लिए यकीन है, हम समझ सकते हैं, बोल भी सकते हैं। जो बंगाली लिटरेचर को हिंदी भाषी साहस से पढ़ सकते हैं, असमिया को बंगाली पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेट करने में इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो इंडो मंगोल बोडो लैंग्वेज का है वो एक है। तो भाषाएं शैलियाँ जो जितना प्रभाव वगैरह जो जितना बोलना है लिंग्विस्टिक साइड में वो बोल सकते हैं, लिंग्विस्टिक साइड में इसमें नहीं आता है। लेकिन जो रचना होता है, रचना में कौन कौन चीज हमारे जो रचना, चाहे कविता हो चाहे फिक्शन हो, इसमें कौन कौन सी चीज उभर आता है, उनकी मेजर फैक्टर है। जो इसमें जो एक नंबर में जो कल्चर है, जहाँ चर्चा के बारे में साहित्य अकादमी ने इसको चुन लिया है। कल्चरल चाहिए, मैंने ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट बोलूँगा। तो मैंने कविता लिखा हूँ। जब भी साहित्य अकादमी द्वारा मुझे बहुत दफाएं इन्वाइट किया है बहुत सारे प्रोग्राम में, पोएट्स मीट से वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। इसमें जब मैं आता हूँ, मैं अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसका कारण ये नहीं है मैं इंफीरियर हूँ, लेकिन मैं जिस लेखन में सब आता है, लेकिन तो हिंदी भाषियों से मैं पूछा, वो ऐसा फल है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी बोलने में बिहार, यूपी, इधर कुछ चीजें नहीं है, वो पौधा नहीं है, उसका नाम कैसा होगा? नाम नहीं है इसका हिंदी, तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, कैसे ट्रांसलेट करूं? तो मेरा ये है, मैं आपने जो दिल में, अपने दिल से अपने एक्सप्रेस करना चाहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वो दूसरों में डिलीवर करने में फेल हो। लास्ट में मालूम हुआ है, इसको एलिफेंट फ्रूट बोलता है। एलिफेंट फ्रूट, वो फ्रूट नाम नहीं हुआ है ना, एलिफेंट फ्रूट, उसको हाथियों ने बहुत खाते हैं, इसीलिए अंग्रेजी में इसको एलिफेंट फ्रूट नाम रखा है। लेकिन जो नाम होता है, नाम सिर्फ सिंगल वर्ड से होता है।
It is the cultural terms. In case मैंने कल्चरल टर्म्स के जरिए वो हमारे जो रचनाएं वो परफेक्टनेस आ जाते हैं मेरे विचार में। और जो बहुत सारे चीज हैं जिसको हम दूसरी भाषा में नहीं मिल पाते हैं। मैंने और दूसरी बात बोलना चाहता था, जो अनुवाद ट्रांसलेशन, एक्चुअली हमारे यहाँ चर्चा में मुख्यतः लिटरेरी ट्रांसलेशन के बारे में सब इसमें चर्चा होगा, लेकिन मेरे विचार में जो ट्रांसलेशन, जब कोई लोग सुबह उठता है और रात को घर जाते हैं तभी ट्रांसलेशन शुरू होता है। तो इसका मूल कारण है कि हमारा देश मल्टी लैंग्वेज देश है। आसपास में पास पड़ोस में बहुत भाषाएं लोग मुझे जितना मर्यादा मिला है, मर्यादा फिर भी हमारे मिचिंग लैंग्वेज मैं समझ नहीं पाता हूँ, गारो लैंग्वेज समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन एक गारो लोग से एक मिसिंग लोग से जब मुलाकात होते हैं हम ट्रांसलेट करते हैं। हमारे बोलचाल हमारे आम लोगों में ट्रांसलेशन के जरिए अपना भाव आदान प्रदान कर रहे हैं। ट्रांसलेशन तो अब का चीज नहीं है। जब हमारे बहुभाषी लोग पास पड़ोस में रहने लगे तब से हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है। तो मेरे विचार है ये, शायद गलत नहीं होगा। तो मैंने और एक शब्द करूंगा। तो जब साहित्य अकादमी द्वारा निमंत्रित होकर मैंने बहुत सारे भारत के विभिन्न जगह में जाने को मौका मिला और बहुत सारे भाषा की कविता को मिला, तो मेरा ऐसा अनुभव हुआ है। स्पेशली हम नॉर्थ का जितना भाषा है इंडिया है, मैं भी समझ सकता हूँ। मैं भोजपुरी समझ सकता हूँ, मैथिली भी समझ सकता हूँ, बंगाली को बोल सकता हूँ, हिंदी तो बोल सकता हूँ। तो नॉर्थ इंडिया का जितना भाषाएं हैं एक से एक जोड़ी हुई होती हैं। और वर्षा जी ने जो बोला था इसमें टोटली होता है, लेकिन एक भाषा दोस्ती की दो मतलब सब इसमें इतना दिक्कत नहीं होती मेरे विषय से। लेकिन मैंने जो बोला था हमारा लिंग्विस्टिक ग्रुप है, हमारा भाषाएं का जो बोली का ढंग है, जो प्रेसेस एंड इडियम्स वगैरह वगैरह, रीजन्स, ट्रेड्स वगैरह जो रचनाएं होता है, उस रचना को दूसरी भाषा में प्रकाश करना आसान काम नहीं है। तो देखो स्वामी, मैं ऐसा ना करूं
तो मेरा अनुभव यह हुआ था, जो बोला है नॉर्थ इंडिया का जितना भाषा है हम बोरो लोग पढ़ सकते हैं, बंगाली पढ़ सकते हैं, असमिया तो मातृभाषा जैसे हैं असम के। तो हमारे बोरो लोगों के लिए हिंदी और शाही हो इतना कठिन नहीं है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लेकिन साउथ का क्या होगा। इसलिए मैंने वो विचारधारा से एम मुकुंदन के जो देवांगी में क्रिटिकल वो हिंदी जो ट्रांसलेशन मिला साहित्य अकादमी द्वारा पब्लिश किया गया, वो तो साहित्य अकादमी अवार्ड विनर बुक है। मैंने उसको ले लिया और साहित्य अकादमी से अनुरोध किया है मैं उसको बोरो बनाऊंगा। तो मैंने उसको किया, जहाँ की केरलन जो लोग हैं उनका कल्चर ट्रेडिशन, उसका बोलचाल रहन सहन, उसको बोरो से मिलाना है कैसा, और जो इस तरह से रहते हैं हमारे बोरो इस तरह से कैसे थोड़ा सा एडजस्ट करके वो मेरा जो लिखन है उसको प्रस्तुत करना है। मैंने कोशिश किया और आई ट्राइड माय बेस्ट ट्रांसलेटिंग दैट वेरी great book by M. Mukundan, Devantani Critical। तो बोरो रीडर्स, बोरो रीडर जो साहित्य अकादमी ने उसको पसंद किया है और उसको इसके ऊपर मुझे पुरस्कार चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है मैंने इस मंच पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, मेरे ऑफिशियल जो बिजनेस के कारण। तो और ज्यादा नहीं बोलूंगा। और साहित्य अकादमी जो काम कर रहे हैं वो ट्रांसलेशन के बारे में, और इसको तो ज्यादा दोहराने की जरूरी नहीं है कि मैं साहित्य अकादमी द्वारा ट्रांसलेशन की जो कार्यक्रम दिया है उसमें मैं भी शामिल हो पाया है। एक है नेपाली पोएट्री थ्रू बंगाली, वो वर्कशॉप था। वर्कशॉप में बहुत सारे पोएट्स को, बोरो पोएट्स को इन्वाइट किया था और इसमें लैंग्वेज एक्सपर्ट भी थे। तो ये हमारे चेयरपर्सन जी ने बोला है, उसमें वर्षा जी भी है, उसको जो एक्सपर्ट रहने से लैंग्वेज के बारे में जो जानकारी होती है उनके सामने होने से परफेक्टनेस आ जाती है। तो एक है मणिपुरी संस्कृत अवार्ड विनिंग संस्कृत, उसको मिला थ्रू बंगाली, कारण हम मणिपुरी समझ नहीं पाते हैं। थ्रू बंगाली बोरो लैंग्वेज में साहित्य अकादमी द्वारा वर्कशॉप के जरिए माने अभी पब्लिश किया है, वो काम किया है। तो और क्या बोलूं, मेरा जो पीठी है कमजोरिया मैंने बोला था, उस कमजोरिया को आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूँ। मैंने अपने बोडो भाषा में लिखे हुए कविता को कभी कभार इंग्लिश नहीं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। तो
पढ़ के सुनाऊं? इंग्लिश में एक बहुत दिन के आगे मैं एक कविता लिखा था बोडो लैंग्वेज में, उसमें इंग्लिश में सब ट्रांसलेट किया है। The color of the sky, red. What is the color of the sky, my friend? No matter. In reply, any name you may call. When I look at our sky, it feels red. The sky comes out in broad daylight, like Masoka flower, like modern flower. There is cultural terms. Masoka flower, which is red. The modern flower, which is red. And when the sky wears red, turns from amber to gray, smoky, purple, and dark. And trees become soddy ghosts painted with lifeless snow. And anyone cleans the sky to his way, it turns like itself. And the sky I view is red, only red. Far beyond the blue. Really, now what is the color of the sky, my friend? Just मैं समाप्त करता हूँ एक हिंदी कविता तक नहीं पढ़ूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर patiently listening my some delivery. धन्यवाद गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी ने जो बोडो भाषा को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं, दो तीन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बात तो इन्होंने की कि ट्रांसलेशन कोई स्पेशलाइज्ड डिस्कोर्स नहीं है। अक्सर हम जब ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो अपने आप से सवाल पूछते हैं कि ये क्या आम दिनचर्या के लिए जैसा है या उस तरह से है जैसे हम ब्रीथ करते हैं। तो मुझे लगता है जो इन्होंने बात की है अभी ट्रांसलेशन के बारे में, अनुवाद के बारे में, महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने जोड़ दिया है इसको दिनचर्या के साथ। वो कहते हैं जैसे दिनचर्या हमारी चलती रहती है तो उसी तरह से सुबह से रात तक हम अनुवाद भी करते रहते हैं। मुझे याद आ रहा था कि गणेश देवी ने कहीं कहा कि हम भारतीय जो हैं, हमारी एक खास तरह की कॉन्शियसनेस होती है, वो है ट्रांसलेटिंग कॉन्शियसनेस। हम सदैव ही अनुवाद की प्रक्रिया में रत रहते हैं। सो ये कोई खास प्रक्रिया नहीं है जो बैठ कर एक ढंग से की जाती है, ये निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है। एक बात। दूसरी बात जो इन्होंने बोडो भाषा को जोड़ के की वो ये थी कि ये सवाल उठा रहे थे कि अनुवाद की प्रक्रिया बोडो भाषा में कब से शुरू हुई। और इनका कहना था जब से भाषा एग्जिस्टेंस में आई। तो मुझे लगता है ये जो बात बोडो भाषा के बारे में कह रहे हैं ये बाकी भाषाओं पर भी बहुत हद तक लागू होती है, क्योंकि अक्सर जब हम हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन की बात करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो आई थिंक समवेयर translation began to happen around the same time as languages began to emerge or evolve. बहुत बहुत शुक्रिया गोपीनाथ जी आपका for sharing your observations. एक तीसरी बात जो इन्होंने की वो ये थी, मुझे लगता है कि जब आप किसी किताब को चुनते हैं तो ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवाद करने के लिए, तो जो इन्होंने कहा कि मैंने एन मुकुंदन जी के उपन्यास को चुना क्योंकि मैं एक संवाद छोड़ना चाहता था उनकी भाषा और बोडो भाषा के बीच। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस को लेकर और ट्रांसलेशन की थ्योरी को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया गोपीनाथ जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री दामोदर खड़से जी से, जो मराठी के कवि भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर, कहानीकार हैं, नॉवेलिस्ट हैं। इन्होंने ट्रांसलेशन के ऊपर बहुत
काम किया है। लगभग 21 किताबें हैं इनकी अनुवाद में, और इनकी अपनी जो रचनाएं हैं उनका भी अलग अलग भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। सो अब हम दामोदर भड़के जी से जानना चाहेंगे कि वो अनुवाद के चैलेंजेस के बारे में हमारे सामने क्या चीजें रखना चाहते हैं। दामोदर। अनुवाद को लेकर सांस्कृतिक चुनौतियां, इस विषय के आज अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी वार्ताकार अनुवाद को लेकर सजग विद्वज्जन, अभी अनुवाद को लेकर अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार की बात कही, इसमें अनुवाद को लेकर, भाषा को लेकर और अनुवादकों के अधिकारों को लेकर बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपने विचार यहाँ पर रखे। वर्षा दास जी ने भी भाषांतर और अनुवाद को लेकर जिस प्रकार का एक अंतर उन्होंने व्यक्त किया। मराठी में वैसे अनुवाद को लेकर भाषांतर शब्द ही चलता है। भाषांतर, आप मराठी की भी विदुषी हैं, मराठी में अनुवाद शब्द कम चलता है और भाषांतर शब्द ज्यादा चलता है। आज हम देखते हैं कि इस भूमंडलीकरण के कारण सारी दुनिया और दुनिया की सारी भाषाएं बहुत नजदीक आती जा रही हैं, और ऐसे में अनुवाद का महत्व पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे देश की जो भी नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें भी मातृभाषा को लेकर बहुत ज्यादा अपेक्षाएं व्यक्त की गई हैं, और ऐसा करते समय जो भी पाठ्य पुस्तक तैयार होंगे पूरे देश में, उन पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने में अनुवादकों की जो भूमिका है वो पहले से कहीं बेहतर और महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अनुवाद को कई विद्वान कला या शास्त्र ऐसा कहने में कई प्रकार के विवाद कहिए या कई प्रकार के मतांतर कहिए, वो निरंतर होते रहते हैं। और इसके बीच यदि हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग, कई पुस्तकों के कई अनुवाद हुए हैं, मराठी में तो कुछ पुस्तकों के 20 अनुवाद हुए। इसका मतलब ये है कि अनुवाद में एक निश्चित मानक स्थिति नहीं बन पाती, वो व्यक्तिपरक भी है। जिस प्रकार जो व्यक्ति अपना वाक्य रचना तैयार करता है, किसी चीज को सोचता समझता है, सांस्कृतिक और आधुनिक दृष्टि से उस पर नजर घुमाता है और उसका आकलन करता है, उसके हिसाब से अनुवाद जो है वो आगे बढ़ता है। इसलिए अनुवाद को एक व्यक्तिनिष्ठ बात कह सकते हैं, वो एक कला है, और इस कला में लोक संस्कृति, साहित्य, धर्म, इतिहास, भूगोल, ये सारे जितने विषय हैं हमारे जीवन के, ये सारे विषय उसमें एक भाषा से केवल दूसरी भाषा में रूपांतरित नहीं होते, बल्कि सांस्कृतिक रूप में भी उनका परिवर्तन होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार अभी बात कही गई कि यदि किसी एक शब्द को लेकर कई भाषाओं में अलग अलग उसके अर्थ होते हैं, उन अर्थों का भी ध्यान रखकर उसके पीछे की जो संस्कृति है, वो संस्कृति को आपने भैंस की बात कही और उससे निकलने वाली जो बातें हैं वो किस तरह से अलग अलग कल्चर में, संस्कृति में उसका अनुवाद करते समय हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां उपस्थित होती हैं। अनुवाद भालचंद्र नेमाड़े का कहना है, उनका लगभग बहुत सारे भाषाओं में उनके उपन्यासों का अनुवाद हो चुका है। वो एक बहुत अच्छी बात इस संस्कृति को लेकर और अनुवाद को लेकर करते हैं। वे कहते हैं अनुवाद एक पाठ का एक भाषिक सांस्कृतिक आवरण से दूसरे भाषिक सांस्कृतिक आवरण में स्थानांतरण की द्विभाषी प्रक्रिया का नाम।
ये एक द्विभाषी प्रक्रिया है। एक संस्कृति को, एक भाषा की संस्कृति को दूसरी भाषा में ले जाने का ये एक प्रक्रिया जैसी है। इसके लिए न सिर्फ दो भाषाओं के बीच और शब्दकोश की मदद लेकर हम अनुवाद कर सकते हैं, बल्कि हमें स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, इन दोनों भाषाओं की कल्चर का, संस्कृति का भी गहन अध्ययन और आकलन होना चाहिए। शब्द ग्रहण करने के बाद जब हम शब्द को ग्रहण करते हैं, उस शब्द ग्रहण करने के साथ हमें उसका अर्थ भी ग्रहण करना होगा। केवल शब्द लेकर हम दूसरे शब्द में या दूसरी भाषा में उस शब्द को रूपांतरित नहीं कर सकते तब तक, जब तक हम उसके अर्थ के हर आयाम को, जितने डायमेंशन हो सकते हैं उतनों को हम उसका आकलन करते हैं, तब जाकर वो एक सही अनुवाद हमारे सामने आता है। एक जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगती है अनुवाद के समय, वो हर भाषा की अपनी एक खूबी होती है, हर भाषा की अपनी एक शैली होती है, हर भाषा को बयान करने का अपना एक तौर तरीका होता है, उसकी एक खूबसूरती होती है। वो केवल शब्द तक सीमित न होकर, वाक्यों तक बंधा न होकर, वो पूरे उसके आकलन में निर्भर करता है। उस शैली को उस तरह से यदि हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि उसका अनुवाद करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात होती है। जैसे एक शब्द आता है संस्कार। यह संस्कार लगभग सारी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में हमें मिलेगा, लेकिन यदि हम कन्नड़ में इसकी बात करते हैं और कन्नड़ के एक प्रसिद्ध उपन्यास की बात करते हैं तो संस्कार नाम से है, और लेकिन उसमें विशेष रूप से कन्नड़ में वो संस्कार को अंतिम संस्कार के रूप में लिया। तो जी संस्कार का हाँ, वो शब्द भी मैंने आगे लिया था कि बांग्ला में भी यदि सत्कार है तो वो अंतिम क्रिया के रूप में है, लेकिन दूसरी शेष भाषाओं में सत्कार स्वागत सत्कार के रूप में या सम्मान के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि इसके पीछे सारी संस्कृतियां जुड़ी हुई होती हैं। मराठी में शिक्षा शब्द जो है वो एजुकेशन के अर्थ में नहीं है। मराठी में शिक्षा यानी पनिशमेंट, दंड। यदि शिक्षा अच्छी तरह नहीं दी जा रही है तो हो सकता है दंड हो, वो बात और है, लेकिन उसका समानार्थी अर्थ यदि हम देखते हैं तो मराठी में शिक्षा यानी दंड, मराठी में शिक्षा के लिए शब्द है शिक्षण, एजुकेशन के अर्थ में। तो इस तरह जब तक उसके पीछे की सारी अर्थ छटाएं हम जानते नहीं हैं, तब तक उसका इस्तेमाल करने में बड़ी दिक्कत होती है। एक और अंग्रेजी का जो शब्द है, उस अंग्रेजी के शब्द में डिम्पल जो शब्द है, उस डिम्पल शब्द के लिए मराठी में बड़ा अच्छा शब्द है। मराठी में शब्द है खड़ी। अब वो खड़ा जो है वो दक्षिण भारतीयों की तरह मराठी में भी दो प्रकार का है। अब ये खड़ी को यदि हिंदी में अनुवाद करना है तो बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे उतना सटीक प्रति शब्द नहीं मिला, और जो उसका भावार्थ है वो है हंसते समय गाल में गड्ढे पड़ना। अब ये इतना सौंदर्य है उसमें, डिम्पल में, और यह गड्ढा कितना अलग सा अर्थ देता है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां आती हैं उसमें गुलजार ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है एक शब्द, वो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। एक गीत है माचिस का, उस गीत में कहते हैं कि जहां तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते। ये जो भंवर शब्द है उसका इस्तेमाल गुलजार ने अपने गीत में डिम्पल के लिए किया है, और हम देखते हैं कि भंवर नदी में है जो कि खतरनाक है, और यदि गालों में है तो स्वागत हिंदी वाला है, बंगला वाला नहीं। तो इस प्रकार ये सारे संदर्भों का ध्यान, भौगोलिक, ऐतिहासिक, इन संदर्भों का ध्यान भी हमें रखना पड़ता है। हम यदि महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, और यदि समुद्र किनारे हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि नारियल के पेड़ बहुत ज्यादा है। उस नारियल के पेड़ों के लिए हम कह सकते हैं उड़ीसा में भी नारियल जहाँ है वहाँ नारियल के हर अंग के लिए अलग अलग नाम है,
पानी वाला नारियल उसके लिए अलग नाम है, सूखा नारियल अलग नाम है, नारियल की रस्सी के लिए अलग नाम है, नारियल के उस डंठल के लिए अलग नाम है, नारियल के पिंड के लिए अलग नाम है। ये इतने अलग अलग जो नाम हैं उस भाषा से जन्म लिए हैं। और जिस भाषा में नारियल उगता नहीं है या बाहर से ये नारियल आते हैं, उस भाषा में ये सारी चीजों के प्रति से बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। या तो हम उन्हें जैसा का वैसा लिखकर हम नीचे छोड़ते हैं, या तो फिर आसपास के कोई शब्द लेकर आ सकते हैं। लेकिन यदि सटीक अनुवाद नहीं हुआ, विशेष रूप से कविता की बात इन्होंने कही, जब तक सटीक अनुवाद नहीं होगा, दो लाइनों के बीच के बयान को यदि अनुवाद नहीं कर पाया, दो शब्दों के बीच के कॉमा को भी यदि उसने अनुवाद नहीं किया, यदि पैराग्राफ बदलने की जगह का भी अनुवाद उस अनुवादक ने नहीं किया, तो संभव है उस कविता का वो भाव नहीं निकलेगा जो मूल रूप से किसी कवि ने बयान करने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास थे जो अनुवादक के माध्यम से उस कविता का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। और ज्ञानपीठ प्राप्त कवि की कविता पढ़ने के लिए जब दूसरी भाषा के लोग उठाते हैं तो उनके मन में एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह उठता है कि ऐसी कविता को ज्ञानपीठ में पुरस्कार कैसे मिलेगा। तो इस प्रकार की जो स्थायित्व है भाषा का, उसका जो सांस्कृतिक पक्ष है और उसकी जो अर्थ छटाएं हैं, उसका और उसकी शैली का जब अनुवाद होता है, तब अनुवाद मुझे लगता है वो स्थायी भी है और सटीक भी है। हरिश्चंद्र परसाई हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकार रहे। जो दूसरा कठिन अनुवाद मुझे लगता है वो है व्यंग्य का। एक तो कविता का अनुवाद सबसे कठिन लगता है और दूसरा है व्यंग्य का। व्यंग्य के भाषा को लेकर बहुत सारे व्यंग्य किए जाते हैं और वो भाषा जनित व्यंग्य होते हैं। उस भाषा जनित व्यंग्य को लक्ष्य भाषा में जैसा का वैसा पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होती है। महाराष्ट्र के सबसे मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ, सबसे लोकप्रिय जो लेखक हैं वो है पू. ल. देशपांडे। और पू. ल. देशपांडे सबसे कम हिंदी में आए, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय। उसका कारण ये है कि उन्होंने जितना कुछ भी लिखा उसमें से अधिकांश जो हिस्सा है वो व्यंग्यात्मक है और व्यंग्य का अनुवाद करना बहुत कठिन होता है। मैंने अभी हरिशंकर परसाई की बात कही। 5 सितंबर को उन्होंने एक लेख लिखा था। उस लेख का शीर्षक था शिक्षक दिन। शिक्षक दिन नहीं, बड़ी की मात्रा, शिक्षक दिन। अब इसका जिस भाषा में दिन और दीन दोनों शब्द हैं उनके लिए तो समझ में आएगा, लेकिन जिस भाषा में ये दोनों शब्द नहीं है तो इसका अनुवाद करना मुश्किल। यदि अनुवाद कर लिया आपने तो शायद वो बात नहीं आएगी जो हरिशंकर परसाई कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार अनुवाद को लेकर ये जो चुनौतियां व्यंग्य को लेकर विशेष रूप से है वो भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। अभी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी होंगी, पर मैं कुछ नाम ऐसे देना चाहता हूँ। जैसे यदि आदिवासी साहित्य का अनुवाद करना है, दलित साहित्य का अनुवाद करना है या इस प्रकार के विशेष साहित्य का अनुवाद करना है, तो उसके सामने नई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। यदि मानव भाषा से किसी दूसरी मानव भाषा में अनुवाद करना है तो शायद वो दिक्कत नहीं है। राग दरबारी का यदि किसी मराठी या गुजराती भाषा में अनुवाद किया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा कसरत करने की आवश्यकता पड़ेगी। वो केवल शब्दकोश हमारी मदद नहीं कर पाएगा। आपका विवेक और आपके अनुवाद संबंधी जो संकल्पनाएं हैं और जो ज्ञान है, जो आकलन है, अर्थ छटाओं की जो जानकारी है, वो यदि आप देते हैं तब आप उसका परिकथा भी इसी प्रकार का उपन्यास है, वो भी अनुवाद करने में सरल नहीं है। 12 मास का एक उपन्यास जो साहित्य अकादमी नहीं छापा मराठी का, वो पूरी तरह से कृषि जीवन पर आधारित है। अब एक भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद एक कृषि संबंधी जो शब्दावली है
उड़िया में अलग होगी, मराठी में अलग है, तमिल तेलुगु में अलग होगी, हिंदी में अलग होगी। और इसके साथ ही फसलें भी अलग अलग हैं। जैसे विदर्भ में केवल कपास बहुत ज्यादा होती है। अब जो कपास वहाँ ज्यादा होती है तो कपास के पौधे, कपास का फल, कपास के अंदर की बिनौले और उससे संबंधित जो मजदूरियां दी जाती हैं और उसके चुनने की जो प्रक्रिया है उसके लिए अलग अलग नामों का प्रावधान किया गया है। इन सारी बातों को हम तभी अनुवाद में ला सकते हैं जब हमें उस पूरी प्रक्रिया की जानकारी हो। तो इसलिए अनुवाद करते समय ये सारी सांस्कृतिक स्थितियां हमारे सामने चुनौती की होती हैं। अंत में क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने संकेत किया है, पता नहीं मैंने कितना उल्लंघन कर दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार अनुवाद को उन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्था के बारे में सवाल उठाया है वो बहुत सही है। ये एक एसोसिएशन हो, अनुवाद को लेकर एक प्रकार अधिकार की बात हो, अनुवादकों के लिए सम्मान की बात हो, कम से कम कवर पेज पर अनुवादक का नाम हो, कम से कम। बाकी बात पारिश्रमिक की तो बात दूर की है। मराठी में इस प्रकार की पद्धति है कि कवर पेज पर और साइड में भी अनुवादक का नाम होता है और अंदर भी होता है। लेकिन यदि हम अमृता प्रीतम का उपन्यास पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये मूल रूप से हिंदी का है और अनुवादक कहीं कोने में बहुत छोटे से शब्दों में उसका नाम नहीं होता है। तो इस तरह अमृता प्रीतम की भाषा, उनका साहित्य, उनका संदेश और उनके बयान का अनुवाद यदि हो रहा है दूसरी भाषाओं में तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अनुवादक ये जो छूट जा रहा है जिसके माध्यम से ये आ रहा है, तो उस तरह से ये भी हो, अधिकार की बात हो और भाषा को लेकर जिस प्रकार का एक गणतंत्र की बात या पूरे उसके सम्मान की बात हो, इस तरह की बात जो शुरू में कही गई, मैं उससे बहुत अच्छी बात लगी मुझे। विदेशी भाषाओं से भी अनुवाद करते समय कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। मैं समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को यही समेटने की कोशिश करता हूँ ताकि सभी अनुवादकों के, विचारकों के, विद्वज्जनों के विचारों को हम पूरी तरह सुन पाए। एक बार फिर मैं साहित्य अकादमी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आने का अवसर दिया और सभी प्रतिभागी वार्ताकारों का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने संयम के साथ मेरी बात सुनी। अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद दामोदर खड़से जी। दामोदर खड़से जी ने अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ अनुवाद से रिलेटेड और उसकी चुनौतियों से रिलेटेड बहुत सी बातें की हैं। संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो जो बड़ी बात उन्होंने की है वो ये है कि आज ग्लोबलाइजेशन के टाइम में एक तरह से अनुवाद की प्रक्रिया एक बहुत तेजी से बढ़ने लगी है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि भाषाओं की समानताएं नहीं होती हैं प्रैक्टिस में, तो ये हमारी दिक्कतें एज अनुवादक भी बढ़ने लगी। ये उन्होंने बात बड़े स्पष्ट तौर पे की। दूसरी बात जो उन्होंने हमारे सामने रखी और मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हम अनुवादक अक्सर दो भाषाओं में संवाद रचाने की कोशिश तो करते हैं, पर करते हुए हम ये भी जानते हैं कि भाषाएं अलग होती हैं, हर भाषा का एक अपना ब्रह्मांड होता है और हर भाषा का एक कल्चर और हिस्ट्री से संबंध होता है। उस वजह से बहुत से शब्द, जैसे इन्होंने नारियल का जिक्र किया कि जिस भाषा में नारियल के साथ ज्यादा लगाव है वहां बहुत से शब्द मिलेंगे, बाकी भाषाओं में समान शब्द ढूंढना बहुत कठिन प्रक्रिया हो जाती है। सो कल्चरल डिफरेंसेस को कैसे नेगोशिएट किया जाए और कल्चरल स्पेसिफिसिटी को छोड़ा जाए या दूसरी भाषा में उतारा जाए और उतारने में जो कठिनाइयां आती हैं उनसे कैसे आपका सरोकार होगा, इन सब बातों को लेकर
इन्होंने बड़ी महीन बातें की हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं दामोदर खड़से जी। Now I'm going to take the liberty to actually break the pattern. Translators are known for that. So I got a suggestion which incidentally did not occur to me. It should have. And I found the suggestion so good that I immediately decided to implement it. And the suggestion is that why not have one lady speaker and then followed by the gentleman. So what we are going to do is, my apologies to Mr. Reddy, who is sitting right next to me. It was actually his turn, but I'm going to take the liberty to invite very eminent translator, thinker, scholar, editor, Minnie Krishnan ji. Before I ask her to take the dais, I would like to publicly acknowledge this fact that if I'm sitting here and talking about translation, it's thanks to Minnie Krishnan's faith, because she had started working on a particular title called Modern Classics in Indian Translation. That is the time we came into contact with each other, and my colleague Pushpinder and I translated one Punjabi novel. I don't know, that was our initial effort, but Minnie did a lot of work on it and made it readable. I'm grateful to her. It won a prize at some point, yes, probably it did. So thank you, Minnie, for initiating me into translation process. And now we would like to know from you your experiences as an editor. She writes very extensively on translation, so we would also like to know what she has to say to us. Over to Minnie Krishnan. It's time to say good afternoon to all who started in the morning. Thanks to Sahitya Academy, whose birthday falls in the Sahitya Academy is 3 years younger than I am. I also want to thank Dr. Srinivasa Rao and his team who have been working unceasingly. I know at times like this they don't even sleep. When we met them in Shimla, we were all so tired. Doubtless it's the same here. And I want to thank, it's no small job to assemble writers, because with every person that you choose, there are so many others you have to give out. I'm extremely grateful because you see, unlike what Rana said, I'm not a translator. I'm the joker in this fight. I'm not a writer, I'm not a translator, I'm a meddler. I try to promote translations. I try to find out what needs to be translated. I try to find new translators, because the translating ecosystem of the country is what is emotionally so important to the country. I'm sure Dr. Varsha Das, who has headed NBT and been chief editor, would agree. You're confronted with this huge mass of wealth. Some of the writers and translators are in silos of their own languages, but a publisher, editor, has to try and accommodate so many things. Some of the problems, some of the challenges in this world of translators, publishers, writers, and the readership. I will try to discuss a few of them. But first I'd like to say that I'm the luckiest person on this dais, because two of my translators are here. Vanumala Viswanatha, whose book I published in 1999. It was actually so successful that long after it went out in print, somebody was pirating it, and it was, I think, prescribed in college after college in Karnataka. This is the book. There were remarks that the translator is ignored, but from way back 1993-94 onwards, I gave equal terms to authors and translators, and the translator's name appeared on the cover.
The catalog also carried pictures of the translator. So I've always fought against that, which I have to say, I was really disappointed to see a big publisher like Penguin, even today, they bring out, this was published in 2018. You have the name of the writer, but not the translator. The translator is ignored. So the rights of the translator, the importance of this cultural bridge builder. Actually, when we talked about the Republic of Languages, I would say, I'd like to quote Arunava Sinha. In an interview, he said, translation is the language of democracy. I thought that was a fabulous remark, because it immediately gives everyone an equal space. I would say these things like, you've heard so much about the failure of finding an equivalence. We know that at the heart of translation there is a kind of failure. But I'd like to mention the world's most translated text, which is the Bible, and say, how did the Bible spread? How was it carried into so many languages of the world? Some examples. You see, in the 60s, when Eugene Nida was, they set up the Bible Society to promote in translation the Bible, particularly the New Testament, in so many languages. I have some here. I have here some of the examples. They're very interesting. For instance, in Peru, there is no fig tree. In the Gospel according to Matthew, chapter 21, 18-24, you have Jesus Christ cursing the fig tree. But there are no fig trees in Peru. So the translator replaced the fig tree with a banana plant. So the Eugene Nida said, it doesn't matter. No, it doesn't matter. Just get the message across. And that's what his translators did. In Greenland, in the North Pole, it's not an agrarian culture. There are no sheep there. So you have Christ described repeatedly as the Lamb of God. So if you said lamb to people, the Icelanders, they wouldn't understand. So the translator said, the little seal of God, S-E-A-L, the little seal of God. Then the message went through. In Africa, it's even more interesting. This is the book of Revelation, chapter 3, verse 23. There's this wonderful statement which you'll find on posters and paintings. Behold, Jesus standing at the door. Behold, I stand at the door and knock. Now, in Africa, you can't have something like that, because in those regions, particularly there are so many languages in Africa, the language into which this is being translated, in that region, only a thief knocks on the door. To check whether there's somebody at the door. So you simply can't have that. In another thing, there is, I can't remember the language, which African language it was, I think Bikio, or I might be mistaken. The entry of Jesus into Jerusalem, which is on a quote, and then you have this Palm Sunday, you have the leaves strewn in his path, and the little thing animal walks on the leaves. But in that part of Africa, you can't do that. You can't say that, because it is an insult to an advancing hero or a king or a chief as he enters to throw anything at all in his path. You can't put flowers, you can't put leaves, nothing. So that part is completely removed. There's no such thing as Palm Sunday there. It's just entry into Jerusalem. Again, going back to what I was reading about that the other day, so I brought some of these things here. But I wonder if they're taking things to, we look at language, the beauty of the language. Tennyson died with one hand on the Bible and one hand on the collected works of Shakespeare. The way the English language developed after the 17th century, 1611, the KJV, the King James Version. But as the centuries went by and
the language is less and less understood. You have in 2005 the New Testament in Contemporary Language by E.H. Peterson, published in Colorado. The famous Lord's Prayer. Thy kingdom come. The sentence they have there is, set the world right. Thy will be done. The words they have are, do what's best. On earth as it is in heaven, the words are, as above, so below. Thine is the kingdom, the power, the glory. This fabulous sentence becomes, you're in charge. It doesn't say you're in charge. How do you pray like this? So, but these are the words that present congregations understand, and those who learned English recently, fairly recently, understand. So, against this background, I'd like to say, though we are discussing literature translation, without translation, there wouldn't be the cross-cultural, civilizational influences at all, because astronomy, mathematics, engineering, science, so much of medicine all came from translations from the Arabic. And there's upstart Europe, so talking about Renaissance in the 16th, 15th century. But it was all actually, what should I call it, the knowledge empire of Baghdad. That was where all the translators worked. And guess what? Many of them who translated and edited and checked, their first language was not Arabic. There were Phoenicians, there were Romans, there were from Chinese, I'm sure they were from here as well. And then it went to Toledo. And when those kingdoms, when those places were attacked and the scholars lost their books, the manuscripts were carried away, that entered Europe. So this whole, flow of knowledge, the knowledge of all that was made possible only because of translation. Literary translation in our country, and when we're talking about the power of English, title. Again, just go back to words. Art, Chandani, Rat. That had an easy equivalent, the Night of the Half Moon. But Vanamala's, the translation that she did of Sara Bhaveka, if we had translated, I know we had a long discussion about the title. Chandragiri, what was that? Tirada. Now, if we had translated it literally, and it was possible to have done that, on the banks of Chandragiri River, see, that has a dreamy, very nice, sweet flow to it. But the book is not sweet. The content is very bitter. It's full of pain. It's about a Muslim community where the child is actually taken away. And the woman wants to go through a divorce, and then get back with her husband is an even very, very painful process. So Vanamala suggested breaking ties. So you have to think long and hard about titles before you finalize, and how it has to carry the content through. That's one more challenge. Another challenge I'd like to talk about is as publishers and editors, you see, I don't know about the recent huge excitement and glorification of prizes, because many of these prizes have certain norms. It shouldn't have been published outside the UK. The original should not be older than 5 years, 10 years, something like that. So naturally, the publishers of the English language world would look at very new material, sensational material that's globalized in some sense. The story begins in Beijing and travels to Lahore and ends up somewhere in Chennai, and there's the whole
in my opinion, carries its dangers because publishers tend, and translators too, tend to neglect the older writers. And if we are going to take translation seriously, make it an academic course, develop courses, papers, specialize in certain ages of spells of translation of literary growth. You can't have a whole, say, 30, 40 years of writing missing. Also, we're not good at keeping records. Now, for instance, I'm helping the government of Tamil Nadu to coordinate a translation program. We go back, when we slip back to just before the 70s, you know how difficult it is to get the older books, whether it's fiction or non-fiction? They're just not available. I have to go and look in libraries, either private libraries or the public libraries. These books are not kept alive. So there is a great danger of, you watch during these terrible floods and all that whole houses just disappearing. That shouldn't happen to us. Books and writers from all African languages shouldn't disappear. That's another fear I have about and also, translation has now made us aware, particularly the more recent works, which is Adivasi works, marginalized writers, Dalits writings, the women's movement and the Ambedkar centenary, which all came around the same time, late 80s, 90s, early 90s. It's made it impossible to read or study literature in a compartment because all these forces have come upon literary studies, cultural studies, history, so not history so much, but yes, you can study history through. In fact, the Tata Institute of Social Sciences had a marvelous book. They designed it for social work. They collected about 30 stories, all translated from Indian languages, but of course they didn't bother about mentioning the translator. Home life, aging. This was long before 1990. Children with disabilities. They found stories that talked about each of these things to introduce the literary aspect, the humanistic aspect, to sociologists. It was a wonderful package. So these things are also acting upon the humanities, acting upon literary studies, culture studies, and you cannot do this without translation because all of your source text, the source information is in the regional languages, in the Bhasha languages. And you need translators to do this, to bring it up, biographies, autobiographies. Uttam Mukherjee worked for something like 6 years just to collect one-act plays from 13 different languages, hunting all over the place, going to little magazines, going to homes where possibly they would have stored an aunt's writing from 20 or 30 years ago. The collection of material, that's a great challenge. So I would like to place these ideas before anybody who's interested in archival material, in sourcing, in reinterpreting, working with translators. The other point, a very important point, was collaboration. You see, no translator needs to work entirely alone. You need to work with people who know the language as well as you do, who read out, in fact, reading aloud the translation. Whenever anyone sends me a draft, I ask them, have you read it to yourself? Have you read it aloud? Read it to your friends. And the sound, the funny, that itself will give you an idea. And narratology, the narrative and dialogue. Then when you narrate, translate and narration, you have to be very careful with your language. I know we're all burdened in English with what I call Babu English. It's very difficult to come out of that. Don't use elevated language. But when it comes to dialogue, you can take a lot of risks. Uma and Sridhar translation in Telugu, Chupaka's story. The title story is, and the title of the volume published by Nandita Sen is, How Are You Veg? See, that's the way we speak. How is it that you're a vegetarian? You won't say that, no? How are you veg?
So using that kind of language. And that's how I think we need to reach the younger generation. Because many of them have actually more respect for what they call, what is known as standard English, which of course is being challenged at every point. There was one other point. Yes, we talked so much about words and equivalences, but there is also the thing of what is not said, the unsaid in a text. The Vivek Shambhag drew this to my attention. There are silences in our texts, in any text, but there are silences. So much more difficult to transmit into maybe a neighboring language or a language from 10,000 miles away. If you want to reach the global market, I call it Cinderella's shoe because it's a mythical. You see, this global reader of our literary materials. We do all sorts of things to fit the text into that shoe. For instance, in the 1930s and 1940s, there was a short story in Tamil in which a priest comes out with prasad. And the line of people in front of him, he frowns. Is one of the characters in the novel. She's a widow. One look at her, and he doesn't want to give her the first trust because he can tell she's a widow because she's not wearing how to get this across to somebody who has no idea about the distinguishing marks of a widow of that time. Or else there is Ramanumi said he's here for this, but he's not in the audience. When I was working with his translator on one of his novels, there's the scene where the wife begins to suspect that her husband is gay, and the husband and his friend are talking in whispers and laughing and giggling and saying, "Okay, on this day we'll go here, we'll go there." Suddenly they look up and she's standing just here near the door. So the husband quickly covers up and says, "We were discussing which bus to take," and his wife says, so how do you bring out this? And the translator put, so I was wondering, this is I was working with the translator and the author. I said, what does this mean? What does it mean here? Then he explained this, but I said, how are we going to get this across? That sarcastic way of, I understand what's going on, but I'm letting it happen. Lots of things like that. Lots of things. And what is the other thing I want to just share? So the improvisation, okay. Improvisation of art. Actually, I'd love to have a question and answer session where another thing we can bring out other things. So the other thing is, we talk about Malayalam or Kannada or Telugu. The thing is, there is the Malayalam within the Malayalam. There are dialects within each of those languages. And no-thanks editors like me, it's all ground down, polished, made kind of bold in an English, which, because we have no other way so far, we have not worked out a system, a strategy of carrying those different kinds of voices through. Long ago, when I was working on a Telugu novel, I think it's called Keela Bommalam, there's the speech of uneducated workers and the household, members of the household. So the translator said, shall I put it in bad grammar? So they said, no, don't do that, because then someone will think you don't know English. So this was, way back, 1994, 96, 97. I said, we're not yet there where we can do things, take such risks. We're trying to cut out one word here, something like that, or maybe drop a D or something, and maybe we can push that through. But now you have this marvelous collection of novel by Rajeshri, translated by J. Devika. The title is The Story, S-T-H-O-R-Y, The Story of Two Women, W-I-M-M-I-N.
and she takes such liberties with the language because this kind of dialect of northern Kerala, uh, and it's about language as well. There's language politics in the book also because this woman's husband is from southern Kerala, where they look down on northern Kerala Malayalam. The whole thing is like that. It's never instead of never, and lots of words like that they learn. But again, she's been careful with the narration, but with the dialogue, she hits the language all over the place. I'm not very sure how it will succeed in a non-Malayali readership because they just won't get it. But I mean, I admire Penguin for having brought out the book the way she wanted it to. Yeah, so these are some of the things I wanted to share. Okay, I'll wind up now. Yeah. The other thing the translation has done is to challenge all the middle class values. Large sections of people have been left out because most of the literature that has been canonized and built up into our history of languages, history of literature, is created by the middle class and the upper middle class. So that is also something that translators are going to drill through. And yes, I completely agree. I wanted to say something about the selection of texts from Tamil into Telugu, Malayalam, and Kannada, which the Tamil Nadu government is funding, but I don't think we have time for that. In case there's a time for a question and answer, I'll take it there. But I just want to read out just one line from this book, The Fatal Rumor, which the translation came 100 years after the original, which is published in 1885. But this thing came in. There's the husband sitting inside, and the wife, husband sitting outside, waking up, and the wife is inside. And he says to her, he wakes up and says, "Hey, you!" Heyyou. And she gets irritated, and in Tamil it's wonderful. She replies, "There's no hey here, Hay. There's no hey here. And no you either. You means EWE, sheep. If you want to buy hay and a you better go to the marketplace." It starts in that very jovial sort of way. So translators can also play with, there you can use the power of English, the punning. So thanks very much for listening. Thank you, Vinny Krishnanji, for providing us a view of translation from outside. It is the years of experience as an editor which I think enables her to give us an alternative perspective on translation. She talked mainly about different translations of Bible, and if I was able to get it right, I think she made a very, very significant point that wherever Bible was translated, it was the language into which it was translated that actually adapted Bible to suit the local needs. I think one of the questions which all translators have to worry about is the idea of context. And generally, we try and bring a text from outside a culture, but we translate it in a manner that we are able to adapt it to local conditions or the conditions of our own culture. So that's one way of doing it. Another significant point she made was, this is a question that all of us ask ourselves when we are engaged in this enterprise. Who are we translating for? And this question, I think, becomes very, very important when you are picking up a classical text or a text maybe as significant as Bible. How many liberties can you take? And, Bible was written way back. It has a history of about 2,000 years, but now when it's translated for contemporary audience, what kind of idiom are you going to use? Viniji, when you were talking about this, I was reminded of my own experience. I did some reading of different translations of Guru Granth Sahib, and it was a kind of a bizarre
thing which I found there. We all know that the text was compiled around 17th century, a certain place in history where it's located. And translators, most of them were 20th century scholars, writers, critics of Punjabi, from Punjabi into English by Indians. Very well-known people, scholars, but what they did was they ended up using archaic language in order to create this kind of a false feeling that probably they were simply trying to create the flavor of the original. So 17th century, they thought Shakespearean language would fit in. So you have art, thou, all those archaic expressions which don't work any longer. So the point is, and I think that's where we have to think very carefully about the observations that Viniji has made, that when we are translating a classical text, then we don't have to actually relocate the text in its own context. Everyone knows about it. We have to relocate it in our own context, in the contemporary times. Otherwise, all kinds of distortions can come into play. So that's something we have to keep in mind. I think another important point that she made was, and which could have only come from a seasoned editor such as Vinny Krishnan, when we are translating a text, I can speak for myself, we pay more attention to the text and very little attention to the title. We think that, we can always come to that later, once the work is done, we can think about it. But I think there are possibilities there in the ways in which a title can be translated. This is what Vinny Krishnan has emphasized for all of us. She made us understand that you don't really have to be literal. I mean, that's one thing that one should always, keep in mind, that there are all kinds of possibilities inherent, which are cultural in nature. We should try and explore. The thing that she mentioned was, we as translators have to be very, very sensitive, not only to the text, not only to the context, but even to the language and the possibilities that it offers. So it's the sensitivity, one of the questions which students often ask translation is, translator English to Tamil Kusami. He said when he was translating God of small things, he didn't read anything else for a whole year. And there's a particular chapter in it where Esther put on the and sent off to scholar. He just couldn't read translate. He accused himself so. The translator is a grasp the target language has to be really terrific, because otherwise we cannot make that giant leap. Thank you. Well said. So now I would like to request Varmala Shunathanji to share her observations. She's also a very renowned translator. She's been
professor of English. She's worked in different institutions and in different capacities. Very rich experience she has, both as a scholar and as a translator. Over to her. Vanmala ji. Thank you, Jen, for your kind words, and thanks, Minnie, for bringing up this translation of Sara Abubakar, who passed away recently from our midst. So, I shall make my presentation. Unusually, I have written it down this time. So, I will read what I have written. The title of my presentation is The Culinary Art of Translating. So you all know what culinary is. First of all, I had a doubt. Should I say culinary and impress you all? Or should I say culinary? Cooking. So what is this cooking art that I'm talking about? So you will know very soon what it is. Because in the past 45 years, the only thing I have done well, with interest, consistently, is cooking. And next best is translating. And I find that the two have a lot in common. So I am going to talk about translation through the metaphor. It's not just metaphor also. You find out what it is. Okay. So the two things that have kept me alive, literally and literarily, over the past 4 decades are cooking and translating. Their energies flowing into each other, sustaining me through the thick of it all. And I'm not the first one to make the connection between women and translation. Several scholars of translation studies, such as Sherry Simon and Tejaswini Niranjana, our own Tejaswini, have already made these connections. But my originality lies in extending it to cooking, okay? Because cooking is something that is really associated as women's work, right? So I propose to draw out the essential constituents that make up the art of cooking and request you all to read what I say essentially as my take on translating. Okay? So I won't use the word translation too much. So whenever I say cooking, in your mind you translate it as translation. Okay? First question. Cooking. What does it mean? Cooking means different things to different people. Now I'm going to give you 2 examples. Pratibha Nandakumar, a daring feminist poet in Kannada, has this to say about her cooking in a poem that she has written. Okay, she says, first I'll read the English and then I'll read the Kannada for you. Cooking, I love it best, for it is the outlet for all my rage and fury. Peeling, pulping, pummeling, pounding, crushing, mashing, squeezing, grinding, rolling, frying, and briskly stirring. When I served hot on the plate, they relish it, smacking their lips. Right? So, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಹೊರದಾರಿ ಅದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ರೋಶಗಳು. ತೊಳೆದು, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು, ಕತ್ತರಿಸಿ, ಜಜ್ಜಿ, ಕುಟ್ಟಿ, ಹುರಿದು, ಅರೆದು, ರುಬ್ಬಿ, ಮುರಿದು, ಬಾಡಿಸಿ, ಬೇಯಿಸಿ, ಹಿಚಿಕಿ, ಮಸಿದು, ಕೊಟ್ಟಿ, ಕಲಿಸಿ, ಗಸಗಸನೆ ಕಡೆದು, ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ತಟ್ಟೆಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿ ಅಂತ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. That is one definition and what cooking can mean to one person. But it can mean something very different for another person. Once I had gone to meet Professor Anantamurthy a little before he passed away, and I had taken gojju. Gojju is a sweet and sour vegetable made out of orange peel. It's a specialty that I love making. So I had taken it for him. And he asked me if I had made it myself as usual.
And so I said, yeah. I said, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. You just spoke a very poetic line, he said. It translates as, waking in the morning, if I can meditatively cook, my being is at peace. So, why did I translate both these and present it? To say cooking can mean very different things to different people. Next question. What is the menu? A question one confronts every day as a cook. The answer, well, it depends. What's the answer? What did I cook yesterday? It would better not be a repeat of what I cooked yesterday. Next, what are the veggies in the fridge and the ingredients in the store? You cannot plan a grand visible with your turtal empty or a fresh cucumber salad when all you have in the fridge is shriveled patagonia. Then again, you must look to the health of the consumers. If your child has had a bad stomach, you don't want to be frying papads or making dumplings. Also, should there be a guest, what should one choose? A spicy hot chutney that is good on the palate but brings tears to his eyes? One can go on. The point is simply that the choice of what to cook depends on the context. It was mentioned earlier, context. The time and place of your location, the purpose of your cooking, the time and energy you have, the taste and needs of those who consume your food. So, when B.M. Srikanthaiah, one of the pioneering modern Kannada writers, translated a cluster of English Romantic and Victorian poems into Kannada in the 1920s, it made waves in Kannada, giving a fillip to the genre of the romantic lyric in Kannada. But when his equally gifted grandson, B.C. Ramachandra Sharma, translated 100 English modernist poems in the last decades of the century, it did not make a similar impact. This is something he has himself admitted. So one has to look for the reasons, perhaps, not so much in the text or the translation, as much in the context of the reception. For whom did he translate? What were they reading? What did they like? Or why did they? What, etc. The next question a cook has to face is, what does it take to cook? What does it need? What qualities do you need? What attributes do you need? Cooking is a composite art. So let me remind you again, cooking is equal to translation. So cooking is a composite art which demands that you work with your head, heart and hand in unison, in complete coordination. You need to know in your head first what the dish should taste like and how to make it. You should know that. It's knowledge. Not only does it require you to cut, chop, grate and grind with your hands, you have to soil your hands. Kai kesaradare bhai musa, says one of the Kannada proverbs. It also demands that you put that love into it to get it right. So it's not enough that you put your head and hand, but also your heart. Your heart should be there. Manna hi lagta to kuch nahi hota. That kind of thing. So you have to get that hada, that padam, that balance right. For that you need love. And they call it also kai ruchi. Kai is hand, kai ruchi. So no two cooks, cooking the same dish, if they're worth their salt, the same way, nor will they taste alike. The end product never tastes alike. It could be the same recipe, same ingredients, even in the same home, yet there is always a difference between the two that the discerning shall know. Cook cannot easily produce the same effect on 2 consecutive days. Isn't that so? So the whole is more than the sum of its parts. Cooking is thus an organic, holistic, contingent phenomenon, like meaning. Meaning always
already provisional subject context for. Okay, so now you see why I'm drawing these comparisons. Next issue. What's in a name? A name is a name. What's in a name? Big deal. If I'm serving the quintessential staple of Kannada diet, saru, to a non-Kannada person, what should I call it as I serve it on the mound of rice on this plate? Please have some lentil soup. Yo, how can you? Where is that lecha concoction soup? Oh? And where is our ramarasa like saru? The purists would scoff. Alright, in the hope that your foreign guest is somewhat familiar with Madrasi food, you might try the word rasam. But where is your authenticity inside? As a staunch Kannada cook who has also learned Tamil cooking from my mother, I know just how different the Tamil rasam is from the Kannada saru. One is from Mars and the other from Jupiter. And to add pure homemade ghee to the fire, the Kannada nationalist in me fumes within at the oppressive regimes of dominant homogenizing cultures. Or conversely, when one had a chance to visit Italy, it was a revelation that the subtle, authentic pizzas of Italy barely tasted anything like the spicy Italian pizzas here in Tayappanhalli, where I live, adapted to suit the spice-loving Indian tongue that one has been consuming under the name of Italian pizza, paying through one's nose. Similarly, consider the case of a fried rice in Shanghai, which looked like the fourth cousin to our Indian brand of Chinese fried rice. Indians, though, such enterprise is not easy to come by. Okay. One last question about cooking. Why cook? Why should we cook? Why I say? Okay. Why? Do you have a choice? Do women have a choice? Huh? Is it not the sacred duty of a woman, especially a wife and mother, to look after the gastronomical well-being of her family? Isn't she born as a woman to seek just this fulfillment? Can there be a better purpose to her life than fulfilling without fail the tummies of her family members at least 3 times a day? More importantly, as the saying in Kannada goes, when there is hing and I'll say first in Kannada, Ingu Tengu idre Mangamano Aduge Martale. That is, when there is hing and coconut, won't a monkey mother also cook well? Okay. So what's the big deal? What is making such a big fuss? Thus, the woman's labor is largely invisible, largely unvalued. But when that woman is not able to cook for some reason, or the woman is absent, then you hire a cook with a capital C, to do the same job, often indifferently. Yet you have to pay. There are wages to be paid, but it's not an organized sector. See, so you still have to pay some calculation and you pay. The scene changes altogether when you call that person who puts together a meal for you as a chef. Chef, master chef. The job is pretty much the same, but they go by fancy European sounding Indian names. When our Molagatani becomes Molagatani soup, for instance, right? You have to pay fancy prices for fancy dishes. And there's a pay packet to be paid out with impressive incentives and perks to the chef. The sad thing, though, is that very few people in the profession make the cut. Thus, the saga of the person who cooks goes with some compensation in the case of the cook, incomparably much better compensation in the case of the chef for the woman. And most translators belong to this last category. Now, there's a postscript I want to add to this.
Now I'm shifting to, I'm talking directly about translation. But I'm constrained to note a few turns the translation is undergoing. Time when the academy was born, Indian Alice mentioned it, translation was individual writers or critics practiced in the locally when they felt inspired by a text. If those texts found a publisher at all, it was lucky. So typically, the name of the translator did not figure in the translated text. It was post. Later, translations moved on to take in aspects of the craft of translation. Institutions like the Academy, National Book Trust, and local literary bodies like Karnataka Sahitya Academy and Parishad as patrons who would train, publish, and offer honors and awards for translation activities. The name of the translator started to appear somewhat. But in the last 15 years, translation has become an enterprise. Enterprise with a capital E, with big commercial publishers getting into the fray. With many more avenues for publicizing one's work in translation through the digital media, through the literary festival circuits, with many more avenues for reviews opening up, and with several substantive awards being instituted, translation has now finally become a visible act worthy of pursuit. Now, the poor, shy translator who was working away from the limelight, working away from the limelight, who was engaged quietly in the joyous co-creating a new text with the author, has to suddenly grow into this visible persona of a creative writer who most deservedly, let me tell you, most deservedly shares the recognition and reward with the author. That is the challenge. And I, for one, would not complain too much about this challenge. Thank you. Thank you, Manumala Vishwanathan ji. I'm sure you would agree with me when I say that, Manumala Vishwanathan ji's presentation has actually refuted two very popular prejudices about translators. One is that they're engaged in a very kind of mechanical work. I think she's convinced us that it's anything that is very, very creative. And she's also convinced us that you can go beyond theory and actually use a very simple homegrown analogy with the help of which you can talk about theoretical issues, challenges of translation, and make them easily available to the audience. And another important thing that I think she has convinced us about is, generally the impression we have about translators is very cheerful.